अच्छा, तो राइट नाउ हम सीआरटी पे एक सेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हम ना सीआरटी के अभी करेंगे बेसिक्स कवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है सीआरटी के बारे में, दैट इज व्हाट इज सीआरटी, ठीक है। एंड व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ सीआरटी, ठीक है। स्मैकी रहा जॉइंट, ओके स्मैकी। तो आई विल रिपीट अगेन, हम अभी कर रहे हैं सीआरटी पे एक सेशन, एक्सट्रीम बेसिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, विल कवर व्हाट इज सीआरटी, व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ सीआरटी, ठीक है। तो अब लेट मी कम हियर टू, बाय द वे जहाँ तुम लोगों को समझना है ना, प्लीज स्टॉप मी देयर बिकॉज इट इज लाइक अ मेंटोरशिप सेशन और ज्यादा लोग नहीं है। वी कैन take it, we can make it as long as possible until and unless everything makes sense to you guys, ठीक है। और I'm not, वो अभी मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं एंड सिंस यू ऑल आर आल्सो माय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई कैन इनवाइट यू गाइस टू दिस सर्वर एज वेल। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है, ओनली दिस इज इम्पोर्टेंट, रेस्ट इज ऑल बुलशिट, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को इस सर्वर में इनवाइट कर देता हूँ। किधर गया मैडम चार्ट्स, ये ज्वाइन कर लेना। तो अब we'll start with extreme basics of CRT, ठीक है। किधर गया important, CRT notes from zero। अच्छा, अब ना CRT हमारे पास ये है, we have one candle range, ठीक है। as soon as we open the charts ना, ठीक है, तो हमारे पास हम कभी भी कौन सा है, फॉरन 4 आवर पे नहीं जाएंगे, डेली पे नहीं जाएंगे, मतलब 1 आवर पे नहीं जाएंगे, विल गो ऑन द डेली फर्स्ट, ठीक है। जस्ट लाइक मार्किंग प्रीवियस डेज हाइज एंड प्रीवियस डेज लोस, ठीक है। तो दिस इज आवर कैंडल वन, हमने ना प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो मार्क कर देना है, ठीक है। एंड वंस वी हैव मार्क दैट, तो अब अगर हमारे पास जो कैंडल टू है, इफ इट इज, इफ इट क्लोजेस इनसाइड द रेंज, ठीक है, तो दैट मीन्स द कैंडल थ्री विल नाउ गो टू CRT low, ओके। एंड हेंस वाइस वर्सा फॉर द बुलिश सिनेरियो, अगर ये हमारे पास CRT लो होता है और ये हमारे पास CRT हाई है, अगर कैंडल टू पहले लो टैप करती है और उसकी बॉडी अंदर रेंज की क्लोज होती है, एम्फोसाइज ऑन द वर्ड बॉडी, ठीक है। बॉडी क्लोजर अंदर बहुत जरूरी है, अगर बॉडी क्लोजर अंदर नहीं है तो द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस द CRT विल फेल, इट्स नॉट अ वैलिड CRT, ठीक है। तो CRT का जो मेन क्रक्स हमेशा हमारा रहेगा वो विक्स और बॉडीज पे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कैंडल टू कैंडल वन की रेंज के अंदर क्लोज होती, दैट मीन्स आवर नेक्स्ट टारगेट इज CRT हाई, राइट। समटाइम्स ये होता है कि आपको कैंडल टू ही पूरा टारगेट डिलीवर कर जाती है, राइट। वी टेक द हाई एंड देन कैंडल टू डिलीवर्स अ टारगेट। अब कैंडल टू को ट्रेड कैसे करते हैं, विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। फॉर नाउ अभी हम एक्सट्रीम बेसिक्स पे चल रहे हैं CRT की, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास कैंडल टू अंदर क्लोज हुई है, एंट्री मॉडल्स की अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो हमारा एंड का टॉपिक है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये थ्री कैंडल पैटर्न ही है और आपको जो सी है ना तीसरी कैंडल ही आपका जाके लो डिलीवर करे। इट कैन बी 5 कैंडल्स, इट कैन बी 10 कैंडल्स, इट कैन बी 100 कैंडल्स, ठीक है। एज लॉन्ग एज दिस हाई स्टेज प्रोटेक्टेड, ठीक है, आपका लो डिलीवर होना ही होना है, ओके। अब हम इस चीज की ना एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी पे ऑल्सो CRT वर्क्स एवरीवेयर, all assets, indices, stocks, crypto, forex, everywhere. CRT works, okay. और ना नहीं है, कोई और फ्रेश चार्ट खोलते हैं, FXCM। अगर हम इसको मार्क करें, अभी बेसिक्स में चल रहा है तो डोंट वरी, हम की लेवल्स पे भी आएंगे, हम हर चीज में आएंगे, ठीक है। फॉर नाउ ओनली बेसिक्स में जो जो पॉइंट बताता चाहूंगा ना, मैं उसको वैलिडेट करता जाऊंगा चार्ट्स पे एग्जांपल्स के साथ।
आपने देखा, ये मैंने बाय द वे लाइव भी शेयर की थी, ठीक है। वी सॉ दैट हमारे पास जो कैंडल 2 है, इट क्लोज्ड बैक इनसाइड द रेंज। अगर इसकी बॉडी को हम जूम इन करके देखें, दैट इज बाय द वे डेली का चार्ट। एज जब तक आपकी डेली स्ट्रांग नहीं होगी ना, यू कैन नॉट ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेली पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वी सॉ दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो बॉडी है, इट क्लोज्ड इनसाइड द दिस कैंडल रेंज, ओके। तो अब जब तक हमारे पास ये हाई प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब हमारे पास ये लो डिलीवर होना ही होना है। हाउ मेनी कैंडल्स इट टुक? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको 6 कैंडल लगे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये हाई प्रोटेक्टेड था, तो दैट मीन्स हमारे पास लो डिलीवर होना ही होना है। अगर ये हाई यहाँ से लेट्स सपोज ऊपर विक बन जाती या बॉडी बन जाती, तो फिर इस सिनेरियो में हमारी ये सीआरटी फेल हो जाती, ठीक है। तो अब लाजमी नहीं है कि इट इज ओनली अ 3 कैंडल पैटर्न, इट कैन बी मल्टीपल कैंडल्स एज वेल, बट जब तक आपका हाई या लो प्रोटेक्टेड है, तब तक वी कैन ट्रेड दैट, ठीक है। और एस सी आर टी ट्रेडर्स, ठीक है, हमारे पास एक चीज बहुत जरूरी होती है। अब अगर हम इस कैंडल को देखें, वी आर नॉट गोना ट्रेड दैट कैंडल। व्हाई? क्योंकि इट हैजंट टेकन एनी लो, इट हैजंट टेकन एनी हाई येट, ठीक है। तो दिस कैंडल इज बुलशिट कैंडल फॉर अस राइट नाउ। जैसे ही हमारे पास इस कैंडल ने उठाया, ठीक है, हमारा हाई, एंड देन वी गॉट अ बॉडी क्लोजर बैक इनसाइड द रेंज, नाउ वी आर एक्टिव, विल गो फॉर शॉर्ट्स। यहाँ पे देखें तो दिस इज अ क्लासिक सीआरटी पैटर्न दैट यू सी एवरीवेयर ऑन इंटरनेट। कैंडल टू क्लोज बैक इनसाइड द रेंज, C3 C4, आप 4 कैंडल्स में आपको मिल गया। If you see again here, for now this candle was bullshit, we will not have traded that range, ठीक है। तो अब जैसे ही इस कैंडल ने हमारा क्या उठाया, सीआरटी लो उठाया, सीआरटी लो के उठाने के बाद अगर हम इसे देखें, तो as long as this low is protected, right, as long as this low is protected, इसका मतलब हमारा हाई डिलीवर होना ही होना। बाकी दिस इज सीआरटी, ओके, द क्लासिक सीआरटी पैटर्न। समटाइम्स आपको C2 भी टीपी दे जाती है, अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ पे कहीं होगी, या ऐसी, ये आपको C2 ही टीपी दे गई है, ओके। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है कैंडल 2 को, हमारे एंट्री मॉडल्स क्या होंगे, दैट इज द मेन की ऑफ सीआरटी, ओके। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, I'll share it with you all in the chat. Entry models is the least thing, that is the last topic, we'll come to it, okay. For now, this this is CRT, the basics of CRT, the crux of CRT, okay. Any questions boys? तो हैं तो मुझे बता दो चैट में, कुछ भी, यहाँ तक अगर समझ नहीं आई अभी तक तो। सॉरी, यू आर सेइंग CRTs, या फॉर नाउ डेली पे। अच्छा, CRT के ये सीन है, CRT जो है ना वो आपको बायस भी देती है। CRT इज योर टॉप डाउन, ठीक है। आप अपनी, यू मेक श्योर बायस विद CRT, मेक श्योर बायस विद CRT, then you trade LTF CRTs for entries etc. अगर आप यहाँ पे यूरो को वीकली पे देखें, तो यू आर CRT यार वीकली पे, अगेन यहाँ से ऊपर इस हाई तक, ठीक है। तो आप अपनी टॉप डाउन भी CRT से कर रहे हैं, आप अपनी बायस भी CRT से बना रहे हैं, एंड वंस योर बायस इज डन विद CRT, फिर आप बाद में लोअर टाइम फ्रेम CRT ट्रेड करते हैं विद टर्टल सूप, दैट इज द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। फॉर नाउ हम इसके सिर्फ बेसिक्स पे ही चलेंगे। हमारी कोई भी कैंडल CRT के लिए यूज हो सकती है, इट शुड हैव, मोहम्मद अला, इसको ना जो उनसा है प्रीवियस कैंडल का हाई या लो लेना जरूरी है, ठीक है। एज लॉन्ग एज इट डजंट टेक एनी हाई या लो, विल नॉट ट्रेड दैट कैंडल। 4 आवर पर CRT देख सकते हैं। हाँ, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ CRT, ठीक है। अब CRT के फ्रैक्टल नेचर क्या है कि CRT एग्जिस्ट ऑन एवरी टाइम फ्रेम, लाइक लिटरली एवरी टाइम फ्रेम। इफ यू गो टू 6 मंथ्स, ठीक है, हम BTC के चार्ट पे आते हैं, BTC USDT, ओके।
तो 1 year पे, 12 months पे. Why I am saying के it will go down from here. ठीक है. क्लासिक CRT पैटर्न 1 year पे जो बन रही है 12 months पे भी है. अगर आप इसको आके 6 months पे देखा तो in 3 year you have 3 candle pattern formed again 6 months पे. So this is the fractal nature of CRT. CRT exists on every time frame, everywhere, everywhere. ठीक है. आप CRT से अपना टॉप डाउन करेंगे. सबसे पहले आप CRT से अपनी बायस बनाएंगे. Once your bias is done with CRT, then you trade lower time frame CRTs for entries. ठीक है. अब आपको यहाँ पे जैसे अगर आप यूरो पे आपके देखा, ठीक है, यूरो USD FXEM, तो we saw that कि अब हम जो है ना यूरो पे 1 week पे इस टाइम हमारे पास ये एक CRT बन गई थी. बाय द वे दैट वाज एन SMT here. दूसरा पॉइंट भी मैं बताता हूँ फॉर नाउ. चलो मुझे ये बताओ, कैन आई डू ट्रेड CRTs इन टिकर्स लाइक NQES गोल्ड? यू कैन ट्रेड CRT एवरीवेयर. आई जस्ट टेल्ड Rihanna कि it exists on every time frame everywhere. Okay, Rihanna is, can you understand? Okay, I'll try to give that session. Okay, I'll try to give that session in English. CRT के किसी भी कैंडल का लो या हाई लेना मस्ट है. तो कैसे पता लगेगा अब ये CRT वैलिड है? उस पे आते हैं, हर चीज पे आएंगे. फॉर नाउ हम जस्ट बेसिक्स कवर कर रहे हैं. पहले हमने देखा CRT हमारे पास क्या है. CRT का टॉप डाउन हमने देखा कि हमारी बायस भी CRT से बन रही है. फिर हम LTF CRTs पे एंट्रीज पे आएंगे और फ्रैक्टल नेचर भी हमने पढ़ ली विद एग्जांपल्स के CRT exist everywhere. Also, Ryanova, your question that whether we can trade CRTs on NQ, ES, etc. Okay, let's open any US30 chart. Capital Com, one day, see, CRT high, CRT low, again CRT within CRT, this, okay, then again CRT, again CRT, right, again CRT here. Got it? I just showed you that it exists on US30, it exists on everywhere. I think यहाँ पे भी there was a CRT here as well, even though the body closed on another chart, the body closed inside the range. So that was also your CRT. You see, the more CRTs. Gives less trades, but it gives guaranteed trades, and it has a very high win rate with a very high RR. जो लास्ट में आपने CRT मार की थी इनवैलिड नहीं है US30 में यार. दिस चार्ट एंड आई थिंक यहाँ पे आई हैव सीन ऑन एन अदर, this is Capital Com का chart. On an other, I think, broker I've seen the wick was closed inside. So yeah, this was also a valid CRT. The pattern is wrong here. Got it? So CRT exists everywhere. CRT is fractal. It exists on every time frame. You do your top down with CRT, and then you trade LTF CRTs once direction is clear. Top down with CRT, bias, trade LTF CRTs with turtle soup once direction is clear. Uh, any questions there, boys? So then we can proceed further.
सीआरटी के लो स्वीप होने पर कैंडल प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज हो, यही जरूरी है एग्जैक्टली। लाइक लुक, एज लॉन्ग एज इस सिनेरियो में, एज लॉन्ग एज वी सॉ हियर, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, कि एज लॉन्ग एज दिस हाई स्टेज प्रोटेक्टेड, ठीक है, दिस this was our candle one, okay, we saw a body closure back inside the range. As long as this high stays protected, we enter from here, and if it doesn't hit our SL, this is a valid CRT, it will go down, it will go down, and it has to take a high or a low first. Welcome to Turtle Soup. Actually, our entry model will be Turtle Soup. That is a topic for the next day. For now, we're just covering the basics of CRTs, top down, and then we trade LTF CRTs with Turtle Soup once direction is clear. SMT जरूरी होगी इसमें किसी भी सिनेरियो में. I don't see SMT much. You have to see SMT once your direction is clear on LTF. Like if you see today you had an SMT with BTC and ETH and it went higher. At least clear. सारे फिर मुझे बता दो so we can proceed further. But what about you? Whether I'm good? I'm okay. Rayano. Hmm. Now our second part is, for now we have covered top down, what is CRT, fractal nature of CRT. Our third point is key levels. And then our fourth point will be every entry is an exit, and every exit is an entry. By the way, this session is recorded, right? Best. Key levels. Okay, for CRT, we'll see three key levels. I only like look for three key levels in CRT, and I don't look for more. Our three key levels in CRT will be number one, key levels. Number one will be fair value gap, the best key level to exist ever. Number two is rejection block, and number three is old high and old low. Also, yeah, these are our three key levels. Now we'll be learning our key levels. Okay, I will show this on chart, like how are we going to trade these key levels. Okay, let me quickly take a screenshot and send it here. Open BTC USDT perpetual Bybit. First of all, key level here. Also, yeah, one more thing. Right now, if we see on BTC, this entire shit is in consolidation, right? So I think I shared these trades live as well. So yeah, our first key level, fair value gap. Text FEG. Okay. The first thing first, while trading in FEG and with CRT, is that once a candle taps a fair value gap, will not immediately trade the next candle. Okay, we have to wait for it to take the previous candle high always. Right now in this scenario, this candle will not be considered at all, because as already we have learned, we have to see that a candle should take a high and a low. And in the case of FVGs, when you trade CRT with fair value gaps, you have to see once a candle fills the fair value gaps, you will not immediately short from here. You will wait. You will definitely wait for a candle to take a high. Okay. Now we saw this high was taken here. Okay, and as we learned already, the body closed back inside the range. Now we'll see, this is our target. First key level. And then our second key level. So also let me explain rejection blocks quickly. So
Clear? First key level, fair value gap. How are we going to trade fair value gaps? This thing clear? Got it? अगर कैंडल 2 ही उसका हाई ले ले instead of 3, yeah, अगर ये वाली कैंडल, if this candle has taken the high and closed back inside the range, I think it's very basic, you should have traded that. Like you see, अगर ये वाली जो कैंडल है, ये इसका हाई लेके अगर रेंज में वापस क्लोज हो जाती, तो हम इसी को ट्रेड कर लेते. लेकिन इन दिस सिनेरियो, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा है कि एक कैंडल जो हमारे पास फेयर वैल्यू को आपको टैप करे, हम उसे इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे. वी विल गो सी ऑन द डेली फर्स्ट. Daily is very important. Before going into entries, before trading lower time frames, daily time frame is very, very important. Until and unless you do not have a clear bias on the daily, you cannot trade lower time frame CRTs, you cannot make a bias, you cannot do anything. So once a candle taps a fair value gap, the second candle has to take the high first. This candle didn't do anything at all. This candle took the high, closed back inside the range. What does it mean? This means we are gonna go lower from here. Okay. And as long as this high stays protected, as long as this high stays protected, our CRT is valid. We'll go lower. First key level clear? Or FPG cleared. Okay, Tala. Best. Got that. इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है या सीआरटी देख सकते हैं? नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, अब्दुल नाफे. These are the points that I'm going to explain one by one, everything. I was giving session to someone else cause we plan a session, so I pretty much keep it raw with my understanding. So this is not a sequence. This is just, these are the points that I'm going to teach you. Okay, if we see these three are our key levels, then with trend CRTs, then against trend CRTs, and then every entry is an exit and every exit is an entry. Yeah, got that. So as CRT traders, our main goal, I'm going to explain the fifth point first before moving. I think we can explain fifth point and with trend CRTs. Anyways, yes, let's leave it. Let's focus on the key levels first. Okay. So our second key level is an old high or an old low. If we see here, the market took that old high, okay, and then the CRT formed here. We got a closure back inside the range. That means we must have traded it from here. Let's just forget about anti models. We'll come it to later on. Okay. This was our old high. And then we can see another example. This was our old low. BTC took that old low. Okay. Old low. Now, once we took that old low, we see that here we'll just mark the candle that took the old low. We'll mark it highs and we will mark it lows. Okay. The highs and the lows, the candle which took the old high or an old low will mark it highs and lows. Okay. So now we see this candle, it didn't do anything. Okay, we'll stay patient. We'll not trade. I'm repeating again, daily time frame is very important for CRT. Okay. We saw that here this candle didn't do anything. It didn't took any high, it didn't took any low. The next candle which took the low of this CRT, okay, and got a closure back inside the range. As long as as long as this low stays protected, that means we are gonna go higher to fill this CRT high or low. This is our second key level. Second key level clear. Just हाँ जी बिलाल.
हाँ, एफईजी के साथ। और इवन इवन द कैंडल लैडर हैज टेकन एन ओल्ड हाई एंड एन ओल्ड लो। उसका भी आपने हाईज है, अब इसने यहाँ पे ओल्ड हाई आपके पास ले लिया इस कैंडल ने, ठीक है। तो हम इसका हाई और लो मार्क कर रहेंगे, जब तक हमें इसका हाई या लो नहीं उठता, कुछ भी नहीं उठता, तब तक विल नॉट ट्रेड दैट। ठीक है, डेली हमारा नैरेटिव क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये हाँ, ये इस पॉइंट पे आते हैं। इस इस पॉइंट पे आते हैं, दिस ये हमारा छठा पॉइंट है, एवरी एंट्री इज एन एग्जिट एंड एवरी एग्जिट इज एन एंट्री, विल कम टू दैट। ठीक है, टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप, की लेवल्स के बाद हम बाकी पॉइंट्स पे भी आएंगे। ओके, तो बल्कि लेट मी जस्ट रिजेक्शन ब्लॉक को एक्सप्लेन करते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक को एक्सप्लेन करने से पहले ना, मैं आप लोगों को विद ट्रेंड सीआरटीज एंड अगेंस्ट ट्रेंड सीआरटीज का बता देता हूँ, एंड एवरी एंट्री इज एन एग्जिट एंड एवरी एग्जिट इज एन एंट्री का बता देता हूँ, देन विल कम टू रिजेक्शन ब्लॉक सिंस इट द एग्जांपल इज प्रीटी मच ऑन पॉइंट हियर। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इस चार्ट में, ठीक है, अब सीआरटी का ये सीन होता है कि हम ना, सीआरटी ट्रेडर्स, हमारे पास हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटीज पता है कौन सी होंगी। ठीक है, अगर हम चार्ट को जूम आउट करके देखें, हमारे पास ट्रेंड क्या है, इस टाइम बीटीसी का करंट ट्रेंड लोअर चल रहा है। ओके, तो हमारी इस टाइम टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास करंट जो एलटीएफ ट्रेंड है, या लाइक हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड नहीं, इवन द ट्रेंड इन दिस स्पेसिफिक रेंज। ठीक है, अगर हम इस स्पेसिफिक रेंज में ट्रेंड को देखें, तो हमारे पास क्या सीन है, दिस इज बेरिश, राइट। ठीक है, तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम विद ट्रेंड सीआरटीज को ही सिर्फ ट्रेड करें। ठीक है, लेकिन हम अगेंस्ट ट्रेंड सीआरटी सिर्फ उनको ट्रेड करेंगे जिन्होंने जाके एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करना है। ठीक है, आवर टॉप प्रायोरिटी will be with trend CRTs, but we will trade only those CRTs against trend that has to fill an FPG. इसको मैं बताता हूँ, लेट्स जस्ट प्रूव इट। क्रेजी शिट परचेज है, इट्स फाइन। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारे पास करंट एलटीएफ ट्रेंड क्या था, एलटीएफ नहीं है, मतलब ये भी जा 1 2 3 4 लाइक तकरीबन 15 या 20 दिनों का हमारे पास ट्रेंड बेरिश था। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ओल्ड लो लिया है, राइट, तो हम इस सीआरटी को अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से देखें, इस पूरे ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, हमारे पास ये बेरिश ट्रेंड था, राइट। तो अगर हम इस सिनेरियो में इस सीआरटी को ट्रेड कर रहे हैं जिसने ओल्ड लो लिया, हमारा एक ही लेवल लिया है, ठीक है, why are we so confident about that CRT here? Why? Because it has to fill a fair value gap up। अगर आप यहाँ पे आके देखें, ठीक है, तो इसने आके ये क्या आपके पास क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप का फिल करना था आके। तो अगेंस्ट हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी, हमने विद ट्रेंड सीआरटीज को फॉलो ट्रेड करना है, क्योंकि दे ऑलवेज डिलीवर 100% टारगेट। बट अगेंस्ट ट्रेंड सीआरटीज हमेशा हम सिर्फ वही ट्रेड करेंगे जिसने जाके एक फेयर वैल्यू गैप को फिल करना होगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इसने अब यहाँ से इसने हमारे की लेवल लिया ओल्ड लो, उसके बाद हमें यहाँ से क्लोजर बैक इन साइड द रेंज मिल गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सीआरटी विद इन सीआरटी भी बन रही थी। अगर जब आपके पास सीआरटी विद इन सीआरटी बन जाए ना, दैट इज ऑल्सो डबल कंफर्मेशन। लेट मी राइट दैट, सीआरटी विद इन सीआरटी इज ए प्लस प्लस। ठीक है, तो since we saw we had a double CRT here and it had to build a fair value gap against this trend, so we are very confident on this setup here. That's why we'll trade it against the trend. ठीक है, with trend CRTs and against trend CRTs की समझ आ गई? Is the session being recorded? Yes, the session is being recorded and I am sending charts as well. और आई थिंक जितनी भी देर का होगा, अगर आप इसको थोड़ा मजीद टाइम लगा के एक दो बार देख लेंगे, इट विल बी वे टू ईजियर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
ठीक है, विद ट्रेंड सीआरटीज एंड अगेंस्ट ट्रेंड सीआरटीज की समझ आ गई? Any question about that with trend and against trend CRTs? Our top priority will always be to trade with trend CRTs, but against trend CRTs will be those that I have to fill a fair value gap. We will trade only those. Clear? अगर किसी और का any question, तो before moving to next point, we'll cover that. हम अगेंस्ट ट्रेंड सिर्फ वो सीआरटी यूज करेंगे जब कोई एफईजी अवेलेबल होगा. एग्जैक्टली. ट्रेंड इज द की इन सीआरटी. अब जो वट एवर सीआरटी यू ट्रेड विथ ट्रेंड, you are gonna ace it. Like, up, I urge you all to trade as much less as possible. ठीक है. Also, the learning server, I hope you all have joined. Here I have put this thing as well, trading rules for everyone. If you like, after this session, and then we do another session on what the entry models. Once that is done, if you do this journaling and do the 30 trade challenge, ठीक है, and you like journal based on this trade questionnaire, okay, you journal based on this trade questionnaire and do a 30 trade challenge while following these rules, okay, only 30 rules. I know this, like, this journaling a trade with this entire questionnaire is like way too hard and way too much time taking. I get it. But if you only journal 30 trades and stick to your rules, stick to these rules, okay, and follow your entry model, follow your everything with perfection, you are gonna be a millionaire in trading. I can write this on pen and paper. Like, no jokes, no jokes. I hope you all have joined this server. I have sent the link above, so watch it. Maybe either ISP अगर पास हाँ. What about two FAGs available at the same time? Sorry, where is this information? That's some gold journaling rules. Let me send this to you again. This is my server. I have like put a lot of things here. My students. Let me just invite again. Everything is bullshit. Only this important section is important. Okay. Rest is all fuckery. This is like a very good example. You saw here the BTC. We just saw this. We saw that this was an against trend CRT. It filled a fair value gap, and then we saw again the candle. This filled a fair value gap, closed back inside the range. Again CRT. So if you just look at this, a CRT done here. Okay. CRT done here, then again another CRT formed. This is like literally the beauty of CRT. Every entry is an exit and every exit is an entry. Heard that? Heard that point? The sixth, the last point. Like, this isn't this like so beautiful? We filled a fair value gap here. Okay. Again C2. So easy. Again. Again. We'll come to entry models, don't worry. We'll come to entry models. Yep. मतलब जो फर्स्ट बाय की ट्रेड ली उसी की एग्जिट में सेल की एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली. Exactly, Tala. Also, there is a seventh point as well. Always,
book your trades at CRT highs and lows. So bro, second CRT भी देखनी कहाँ बन रही है, so then we can will exit the trade. Exactly. तो इसलिए मैंने ना Abdullah I have put the seventh point. Always book your trades at CRT highs and lows. Like always. Like you never know what will happen. And sometimes the only time another point, the eighth point. The only time your CRT with trend won't deliver the target will be when there's an SMT created. I can prove that eighth point very easily. Let's come to, by the way, the seventh point is clear, right? Like always book your trades at CRT highs and lows. Like if you see here, you got a crazy reaction. Again, अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड लाइक यहाँ पे आपने ये CRT C2 आप ट्रेड कर रहे थे, एंट्री मॉडल सेशन बाद में होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी. अगर आप ये जो मैंने सेवंथ पॉइंट लिखा है, अगर आप इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आपका CRT लो टैप हुआ, यू ट्रेडेड दैट. और अगर आप यहाँ से इसको अपना बुक नहीं करते अपना TP, ठीक है, ठीक, अब वापस नीचे आ जाता है, फिर डिप्रेशन में चले जाता है, ये क्या हो गया. इसलिए ना अपना जो भी है, आप लाइक CRT जब ट्रेड कर रहे हैं, तो आप CRT में ऐसा हाईज एंड लोअर्स पे बुक करें. एवरेज कैंडल आप H4 टू M15 ट्रेड कर रहे हो, डेली टू 1 आवर ट्रेड कर रहे हो, वीकली टू 4 आवर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, CRT हाईज एंड लोअर्स पे TP बुक करो, ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत क्रेजी रिएक्शन आता है हमेशा. और वो आपको एटलीस्ट 1 to 3 आवर देती है, एंड दैट इज मोर देन इनफ. लाइक यू आर डन फॉर द डे. यू हैव नो जॉब टारगेटिंग द हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटीज या कुछ भी, ठीक है. अगर आप लाइक CRT हाईज एंड लोज पे ही खाली अपने TP बुक करते जाएं, तो आपको 1 to 3 इजीली मिलेगा हर ट्रेड में. गॉट दैट. एट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं. अब एट पॉइंट को टैकल करने का कोई तरीका है नहीं, बट आई कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल. We come on this GBP USD chart here weekly, ठीक है, ये देखो. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये 16 मार्च 2026 की कैंडल थी, ठीक है. क्लोज बैक इनसाइड द रेंज, और ये C3 ने हमारे पास क्या किया, टारगेट डिलीवर किया आके. देन फ्रॉम देयर वी वेंट हायर. अब अगर हम इसी को यूरो पे देखें, लाइक 26 मार्च 2000 16 मार्च 2026, ठीक है, अगर हम इसको यूरो USD पे देखें, ठीक है, 16 मार्च 2026, और यहाँ पे प्राइस ने किया किया प्राइस क्रिएटेड एन SMT, ठीक है, it didn't deliver the CRT low, and immediately like once again the sixth point comes again. Every entry is an exit, and every exit is an entry. Another CRT was formed, and we went higher. So the only time your CRT doesn't deliver your target is when an SMT is created, and immediately it might create another CRT. Like look, you got C2 closure back inside the range. See, that means as long as you have an SMT here, as long as this low stays protected, this is your target. And then you just literally got into longs. It's this simple. Once you have your top down clear with CRT, your daily narrative, your bias is cleared with CRT, you can easily trade lower time frames. We'll come to lower time frames in the next session. So yeah, till here everything is clear, boys. If you all have any questions, you can ask me. Then we will move to rejection blocks, and then we will conclude the session. Clear? Yep, sir. Okay, best. Clear. सारे बता दो यार. Like everybody, please tell. Yes, clear. Best. Also, this session is recorded, and I urge you all to watch it once again. Clear, brother. बेहतरीन. Hmm. So yeah, our last point, our key level, rejection blocks.
Where do we say it? USD. Your basically your rejection logs are those like a failed change in state of delivery is basically a rejection log. What? Text failed CAST is basically a rejection log. Okay. Now let me remove all of that. And in that, you can see like so in this scenario we saw that we had a series of what down close candles. We tapped that. Okay. If we got a body closure above that, like right over here, that means we were gonna go longs. But now we saw the change in state of delivery failed here. Okay. In this series of down close candle. And we got a closure back inside the range again, that Euro CRT. This is basically your rejection block. The candle bodies. First example, exactly in this scenario, I will show you more examples. Again, not just this low, not like in this scenario, you were both of the key levels at the same time. If you see here, you had this old low, this basically CRT low, and again a rejection block. We got a reaction from here. That's why I always say the candle bodies they have like crazy importance. Like see on H1. About this liquidity, it was never tapped. If you only see this candle body, the body we marked on the daily, we never got closure inside it. And then from there we only went higher. Also, let's see another example of rejection block on BTC. One day. Again in this scenario, we saw that this was the old low was tapped. Okay. Let's just forget it. Here. We saw that series of up close candles. Okay, we'll mark the first candle from where the range was started. This rejection log. See, we like literally never got a body closure below that. If we only had gotten a body closure below that, that means we would have gotten in shorts. See, in this entire scenario, we never got a body closure below that. And what happened? We only went higher from there. That's why I always urge people like whenever you are trading the high time frame. Okay, whenever you're trading, always book your TPs not at liquidities. Like always book your TPs at the candle bodies. Got rejection block. Look shorts based on Friday 4 or rejection block. Rejection blocks are crazy. Exactly, Shazwan. Not on gold. Rejection blocks are crazy everywhere. I can show more examples as well, but I urge you all to study rejection blocks yourself. Like once you have a good grip on RBs, like these are your SMC order blocks. This is everything in trading. The candle bodies they have a lot of importance. We can see more. Like people who would have shorted this range, they would have tried to target what this liquidity, right? But it never came lower. Look, it never came lower. It got a reaction from this candle body, this white candle body. It acted as a resistance. A failed change in state of delivery is a rejection block, and rejection blocks most of the times they act as support and resistance. We went higher from here.
taking that what liquidity. Again, rejection block. See, if people tried to long from here, they would have tried to target that liquidity. But no, we never went higher to this liquidity. What happened? It never closed. It never gave a body closure. And then immediately a CRT formed and we booked. We traded from here. That's it. Again, you see from here, people who were shorting here in this range, they would have tried to target this liquidity. Okay, but we never came to here. We didn't get a closure here. We went higher again. Then we formed another CRT. And now we would have targeted the liquidity. So once you are trading this range here right now, okay, your first TP should be at the candle bodies. Once your TP at the candle bodies is done and you get your rejection, and then when you see another setter forming, then you trade liquidities. Then you target these liquidities. So always book your TPs at candle bodies. Observe the reaction from there. Then form setups again. This is like the real trading sauce here. This is so good here. I can show you multiple. Okay, this you see, people who tried to target this liquidity here would have gotten wrecked. What happened? We got crazy reaction from this body. Again, a CRT formed, and then again we went higher. Again, I can show you guys thousands of examples here in this chart. Again, rejection block. Again, CRT. See how crazy this is. How crazy this is. This shit is like literally ego trade. You study that. If you only study that chart, like guys, your trading is sorted for the rest of your life. Yes, Makira, I've told again and again the session is being recorded, so don't worry about that. Got rejection block, boys. The best key level to exist till date. You don't need SMC, you don't need ICT, you don't need no bullshit. Learn candle bodies, book your trades, try to trade with trend CRTs. That's it. Our next session, our second session, will be on what? Entries and turtle soups. This is like done. CRT is done. I thought we'll like have 4 to 5 sessions, but this shit is done here. Go practice that thing on every pair. Whether it's BTC, like it's crypto. People think CRT only works on Forex. I showed you everything on crypto on one chart on BTC. People are always so afraid to trade Bitcoin. But we just played along with Bitcoin in this entire range, like in this shitty range. We got so many trades. People are scared of these ranges. Our second session will be on low time frame CRTs, turtle soups, entries, and yeah. And once top down is clear, how are we going to like trade the trend further?